Hi guys, I'm Mrs. Simira. This is me, Harish. My name is Sadiq. Mehek. So सादिक आज हम क्या कर रहे हैं? अच्छा, आज जो हम लोग करेंगे काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि व्हाट इफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाज वन कंट्री. या मतलब अगर हम लोग अज्यूम करें जैसे बिफोर इंडिपेंडेंस, लाइक 1947 में हम लोग सेपरेट हो गए थे, इंडिया पाकिस्तान, और उसके अलावा श्रीलंका यानी जिसको सीलोन कहा जाता था पहले, फिर बाद में बांग्लादेश 70s में जो हुआ, ये सारी कंट्रीज या इवन नेपाल, भूटान, जिसको भी हम बुला लें, जिसको हम साउथ एशिया भी कहते हैं, तो साउथ एशिया के बजाय अगर वो जैसे अखंड भारत कहा जाता है, अगर वो सब साथ होता तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट कैसा होता? कैसा होता एग्जैक्टली? तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है. तो स्टार्ट करें? या लेट्स स्टार्ट. Population and cultural impact on our world. Currently, 7 different countries exist in the region: India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Bhutan, and the Maldives. So, what would it look like if all 7 of these modern countries united overnight to form a new and larger country that we'll be calling for simplicity Greater India? Yeah. Well, for starters, the new country's population would be gargantuan. 1,728,904,000 people, or about 23% of the entire population, almost 1 out of every 4 people. That is more people than North America, South America, the Caribbean, and Europe combined. Oh my India God. alone has more people living there than the entire continent of Africa does, and that's only going to increase as time goes on. This can also be seen by taking a glance at the biggest cities across the new country, the top 3 being Delhi, Karachi, and Mumbai, all of which have higher populations than even New York City does in the US. Yeah. Of the country's top 10 largest cities, 7 of them would be located in India, while 2 would be in Pakistan and only 1 in Bangladesh. From this, it's obvious that India is basically the Jupiter of the Indian subcontinent, Oh my God. dominating the region's gravity and the smaller countries that orbit it by its sheer size. That's true. But what happens when we quit looking at the subcontinent divided by current political reality? If we look at an ethnic map of the area, it's confusing to say the least. There are over 2,000 different and unique ethnic groups present inside of India alone, in addition to 22 different major languages. Only the continent of Africa has a higher diversity of cultures, genetics, and languages than India does. But most of these Indian ethnic groups can be divided between 2 major families: Indo-Aryans, which account for 73% of hypothetical Greater India's population, and Dravidians, which account for 19%, with remaining 8% being a mix of other, smaller groups. To expand on that, the region's linguistic diversity is every bit as diverse as you would expect. About 1/3 of the population would be able to speak Hindi, Oh my 15% would speak Bengali, Oh my another 12% would understand Urdu, while the Punjabi, Marathi, Telugu, Tamil, and Gujarati languages would all have significant The 3 representation. dimensions Others. 4 of the world's most significant religions were The born majority inside speak India: Hindi, no? Hinduism, Hindi, Sikhism, Urdu. and Jainism, all of which continue to have a significant presence. Hinduism would make up the vast majority of hypothetical Greater India at 63.6% of the population, while Islam would be a significant minority at 31.4%. Christians would only make up 2%, Buddhists would be represented by 1.7%, and Sikhs would make up the final 1.3%, with other religions only having a tiny following. About 34% of Greater India's population would be living in cities, with the remaining majority of the hypothetical country residing in the countryside. Perhaps the most challenging problem for the new country would be the region's economy. Hypothetical Greater India would have a combined nominal GDP of $3.4 trillion, Oh my God. which would make it the world's 5th largest economy. But considering that India alone is already the world's 6th largest economy, all of the additional countries added in would only make it surpass the United Kingdom's economy, while remaining just behind Germany and Japan. In terms of GDP per capita measured in purchasing power parity, the average citizen of this country would be earning $7,265 per year, far below the global average of $17,300 per year. Citizens, on average, would be earning more than citizens of Uzbekistan or Vietnam, but earning less than those of Bolivia or the Philippines. The economy would, however, be capable of supporting a very large military budget of $83.8 billion
billion US dollars, the third highest budget in the world, but significantly behind the budgets of both China and the United States. Adding in the soldiers from all 7 modern countries, the hypothetical Greater Indian Army would have an active duty force of 2.6 million soldiers, the largest standing army in the world, with an additional 2.1 million in the reserves, which combined would give the new country the world's 4th largest total military size, behind Vietnam and the 2 Koreas. In the event of a war, however, Greater India would have the largest manpower reserves in the world to pull from. Some of the new nation's greatest problems would be its high unemployment rate, currently hovering around 10%, and the very young age of the average citizen, just 27.6 years old. This might not be a huge problem now, but as India and the rest of the region develops further, it's almost a guarantee that the country will face the same kind of demographic problems currently plaguing places like Japan, where the average age is a very high 47.3 years. Somewhere around 50 years from now, when India's population has likely begun to stabilize around 1.7 billion people, their population will thereafter begin to shrink just like it is in Japan and other developed countries around the world. Perhaps India and the entire region at large can learn from how currently developed countries are handling their demographic issues to prepare for their own future, just like how you can prepare for your own future or your company's future by going over to Squarespace next. Regardless of what it is you do, whether it's podcasting, art, blogging, or you're looking to create your own YouTube channel, you need a way for people to find you online. Squarespace can seriously help individuals and small businesses like you or me make something that was previously only available to huge corporations. An amazing, beautifully designed, and professional-looking website. With their intuitive and easy-to-use website builder, beautiful design templates, reliable 24/7 customer support, and reasonable prices, and best of all, you can try out Squarespace. Okay. Nice. तो अगर देखा जाए ये जो इंडिया की बात की है उन्होंने कि मतलब टोटल पॉपुलेशन की अगर बात करें इवन करंट सिनेरियो में तो 1.7 बिलियन बनती है इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका मतलब पूरा साउथ एशिया का मिला ले 7 कंट्रीज को तो इट्स अराउंड आई थिंक ये पॉपुलेशन काफी वर्थ भी है क्योंकि जिस तरह से चल रहा है मतलब फर्स्ट नंबर पे सेकंड नंबर पे तो कहीं ना कहीं वो लास्ट में इसमें नहीं जा रहे हैं वो उनका टॉप पर रह रहे हैं तो मुझे लगता है वर्थ है और जहाँ तक पता है तो आई थिंक इंडिया वैसे भी बहुत बड़ा है यार इंडिया बहुत ज्यादा बड़ा है क्योंकि अगर हम दूसरे लाहौर में जाए तो आई थिंक हमको आवर्स लग जाएंगे इतना तो मैं लगता है बड़े थक गए यार पर उनको काफी टाइम लंबा चढ़ जाता है क्योंकि जाहिर उनके इतने बड़े हैं इतने बहुत क्योंकि एक तो उसकी अगर आप खाली इंडिया को देख लो तो उसकी अराउंड 1.3 या 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन है ठीक है और इट्स अ ह्यूज कंट्री और मतलब अगर कंट्री के साइज की बात की जाए तो साइज के हिसाब से भी टॉप 3 में आता है और पॉपुलेशन के हिसाब से सेकंड पे आता है आफ्टर चाइना एक तो ये और दूसरी उसकी सिविलाइजेशन इट्स मोर देन 5000 इयर्स ओल्ड ठीक है ना उसकी बात जो दूसरा जो इन्होंने इकोनॉमी की बात की तो 7th नंबर पे है हां टोटल इकोनॉमी अगर ये जो कंबाइन हो जाए पूरा सबकॉन्टिनेंट तो 3.4 ट्रिलियन है लेकिन अगर सिर्फ इंडिया की बात की जाए तो इंडिया इज 2.6 ट्रिलियन डॉलर्स बल्कि नहीं 2.9 ट्रिलियन डॉलर क्योंकि पाकिस्तान बांग्लादेश वगैरह की मिला तो 500 बिलियन से ऊपर नहीं बनती है राइट तो अगर इंडिया इटसेल्फ आप देखें तो इट्स अ ह्यूज कंट्री और बाकी कंट्री से कंपेयर की जाए तो कम हो जाती है चाइना की और यूएस की ज्यादा है 10 ट्रिलियन प्लस है चाइना मतलब सेकंड नंबर पे हमने देखा ज्यादा चाइना सेकंड नंबर पे है वैसे भी हम लोगों ने काफी ज्यादा एक्सप्लोर किया है काफी हमने YouTube के जरिए कहीं पर भी हमने नॉलेज की तो हमने काफी देखा है कि जो इंडिया है वो मैक्सिमम टॉप 5 में तो आता ही आता है तो जरूरत ही नहीं टॉप 10 की भी जरूरत नहीं होती है तो काफी ज्यादा हम लोगों ने इंटरेस्टिंग चीज आज देखी है और आज हमें नई चीजें कुछ पता चली है यहाँ पर हां वो उसकी एक और मैंने एक और चीज देखी कि मतलब आर्मी साइज के हिसाब से फ्लो और सोल्जर्स के हिसाब से उसके सबसे अगर देखा जाए तो इंडिया इज ह्यूज मतलब यू नो और काफी मतलब अगर कंबाइंड हां और कंबाइंड हो भी जाते हैं इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका वगैरह तो उससे फर्क पड़ेगा लेकिन जो उन्होंने हां पॉपुलेशन की उन्होंने बात की पॉपुलेशन में भी अगर आप देखो तो वो यूथ काफी है मतलब 27.6 का एवरेज लगा है बाकी मज्यूम भी कर ले तो पॉपुलेशन जो यूथ की अगर हम बात करें तो 30 to 35 मतलब ऑन एवरेज है तो 35 जो मैं एक बार पढ़ रहा था इंडिया और पाकिस्तान दोनों में 50% की जो की पॉपुलेशन है इट्स अंडर 35 तो यूथ अच्छी खासी है हमारे पास नाइस ये एक बड़ा एडवांटेज जो हमें नजर नहीं आता सोशल मीडिया में बनती है बट लेट्स सी अगर अज्यूम करते अगर कभी साथ हो जाते तो क्या होगा आई थिंक 1 साल 2 साल पुरानी है अब तो चीज अपडेट हो गया होगा ऑफ कोर्स अब तो और भी चीजें चेंज हुई होगी आफ्टर कोविड के 19 में और भी चीजें बदली होगी चीजों में तो खैर हम और भी देखेंगे जो हमारी वीडियोस आएंगी या इनकी कुछ आएंगी तो डेफिनेटली हमें और पता चलेगा हम रिएक्शन देंगे गाइस इस तरह से आप हमारा चैनल देखें डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन अल्लाह हाफिज